Good morning, students of class ninth. How are you? Hope you all are doing well. I welcome you once again in class of science. Dear students, this video is continuation of lesson of biology, that is why do we fall ill. This chapter consists of 3 videos and this is the third video. Listen this video again and again for clear understanding. In this video, students, we will be covering the following topics. Organ और टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस, दैट मीन्स ऑर्गन और टिश्यू के ऊपर कैसे अटैक किया जाता है पैथोजन से. Principles of treatment and principles of prevention. We will cover all these topics in this video. Now, starting with organ or tissue specific manifestations. Pathogens. Pathogens may enter our body through nose, mouth, skin or blood. The disease causing microbes enter the body through different routes and thus affect the area. It means जो pathogens हैं, that means pathogens are microbes. These are disease causing microbes and they can enter our body through any route. That means they can enter our body through nose, they can enter our body through mouth, they can enter our body through skin or through blood. They can choose any of these routes and they can enter inside the body and cause disease. And thus they affect that area where they enter. Now, for example, if pathogens enter from air via nose, they are likely to go to the lungs. For example, bacteria causing tuberculosis. In this example, we have studied that जो pathogens हैं, disease causing microorganisms हैं, when they enter from air via nose, अगर वो air से nose के अंदर enter करेंगे, then they directly goes into the lungs. And example of this is bacteria causing tuberculosis. And if pathogens enter through the mouth, they can stay in the gut lining. For example, typhoid causing bacteria, or they can go to the liver. For example, viruses that causes jaundice. Now in this, when pathogen enters through the mouth के through enter करेंगे, that means फूड के थ्रू भी एंटर कर सकते हैं, वाटर के थ्रू भी एंटर कर सकते हैं, एंड दे कैन स्टे इन द गट लाइनिंग. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर वो माउथ के थ्रू एंटर करेंगे तो वो गट लाइनिंग के अंदर स्टे करेंगे. एंड एग्जाम्पल इज टाइफाइड कॉजिंग बैक्टीरियाज. एंड अगर समटाइम्स दीज पैथोजेंस they enter through mouth and they can go to liver. For example, viruses that can cause jaundice. And if they come via sexual organs, then pathogens will spread to lymph nodes all over the body. For example, HIV virus. Here is the example. If these pathogens they enter through sexual contact or through blood or through injection, they can enter into the lymph nodes all over the body. Example is HIV virus, which causes AIDS. If pathogens enter through a mosquito bite, then they may go to the liver and then to the RBCs. For example, malaria causing microbes. In this, when pathogen, that means disease causing microorganism, enter थ्रू मॉस्किटो बाइट, अगर मॉस्किटो किसी को बाइट कर जाता है, देन दिस पैथोजन प्लाज्मोडियम इट एंटर्स इनटू द ह्यूमन बॉडी एंड दे मे गो टू लिवर. पहले वो लिवर में जाएगा एंड देन दे एंटर आरबीसीज. फॉर एग्जांपल मलेरिया कॉजिंग माइक्रोब्स, और दे मे एंटर इनटू द ब्रेन थ्रू ब्लड. इट मीन्स कि समटाइम्स जो पैथोजेंस होते हैं वो ब्रेन के अंदर भी ब्लड के थ्रू एंटर कर जाते हैं. एग्जाम्पल है वायरसेस causing Japanese encephalitis or brain fever. This is Japanese encephalitis. It is caused by virus and this is its common name is brain fever. The signs and symptoms of a disease depend on the tissue or organ which the microbe targets. It means कि जो symptoms होंगे वो कैसे होंगे, that will depend on the tissue or organ where the microbe
टारगेट्स, जहाँ पर माइक्रोब, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब जिस ऑर्गन को टारगेट करेगा, जिस टिश्यू को टारगेट करेगा, उसी के अकॉर्डिंगली साइंस और सिम्टम्स होंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ लंग्स आर द टारगेट्स देन सिम्टम्स विल बी कफ एंड ब्रेथलेसनेस. अगर लंग्स टारगेट होंगे तो क्या होगा, सिम्टम्स उसमें क्या होगा, कफ और एंड ब्रेथलेसनेस. दैट मीन्स खांसी और सांस का फूलना, प्रॉपरली सांस ना आना, दैट इज कॉल्ड ब्रेथलेसनेस. इफ लीवर इज टारगेटेड देन देयर विल बी अ जॉन्डिस. अगर लीवर टारगेट होगा माइक्रोब से, पैथोजन से, देन देयर विल बी जॉन्डिस. जॉन्डिस इज पीलिया. इफ द ब्रेन इज द टारगेट वी विल ऑब्जर्व हेडेक्स, वॉमिटिंग फिट्स और अनकॉन्शियसनेस. अगर ब्रेन को टारगेट किया जाएगा माइक्रोब से तो क्या होगा, उसके सिम्टम्स या साइंस क्या होंगे, हेडेक, सीवियर हेडेक होगा, सिर दर्द होगा, वॉमिट्स होंगी, उल्टियाँ होंगी, फिट्स आ जाएंगे एंड ऑल्सो अनकॉन्शियसनेस, बेहोशी जैसा फील होगा. नाउ वी प्रोसीड टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट. What are the principle of treatment? The two ways to treat an infectious disease are, first is to reduce the effect of disease by giving treatment which can reduce the symptoms. According to this approach, a patient is given medicine to reduce the symptoms like fever, pain, stomach ache, nausea, body ache, cough और cold. कुछ भी होगा तो पेशेंट को एक मेडिसिन दी जाएगी ताकि उसके जो ये सिम्टम्स हैं, जैसे कि फीवर हो गया या स्टमक एक होगी, बॉडी की होगी, इन सबको रिड्यूस करने के लिए पेशेंट मे बी एडवाइज्ड टू बेड रेस्ट इन ऑर्डर टू कंजर्व एनर्जी. इन दिस केस पेशेंट को बेड रेस्ट के लिए भी बोला जाता है सो दैट वो अपनी एनर्जी को कंजर्व कर ले. एंड दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट इज सिम्टम डायरेक्टेड. ठीक है, उसको हम बोलते हैं सिम्टम डायरेक्टेड treatment. It provides temporary relief from the symptoms but does not cure the disease. वो कुछ टाइम के लिए symptoms से temporarily relief ज़रूर provide करवाता है but it does not cure the disease. Now next way to treat infectious disease are to kill the cause of disease. जो डिजीज़ का कॉज है उसको ही ख़त्म कर देना. किलिंग ऑफ द माइक्रोब्स विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स. दैट मीन्स कि जो माइक्रोब्स हैं वही डिजीज़ को कॉज करेंगे, उन्हीं को अगर किल कर दिया जाए, उन्हीं को ही ख़त्म कर दिया जाए, देन क्या होगा, जो हमारी बॉडी है उसमें अपने आप ही जो सिम्टम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, मलेरियल पैरासाइट इज ट्रीटेड विद क्लोरोक्विन. दैट मीन्स क्लोरोक्विन नाम की एक एंटीबायोटिक है जो दी जाती है मलेरिया में. एंड दिस विद दिस क्लोरोक्विन दिस मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम इज किल्ड. आफ्टर स्टडिंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट वी प्रोसीड विद प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन. दैट मीन्स हम डिजीज़ को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, यानी कि होने से पहले उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं. द वेरियस वेज टू प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिजीज कैन बी प्लेस्ड अंडर टू कैटेगरीज. फर्स्ट इज जनरल वेज ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शियस डिजीज एंड नेक्स्ट इज स्पेसिफिक वेज ऑफ प्रिवेंटिंग एक्सपोजर. नाउ इन जनरल वेज ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शियस डिजीजेज what comes is providing safe drinking water which saves us from waterborne diseases. That means अगर हम safe drinking water यूज़ करेंगे तो क्या होगा, उससे वाटर बॉर्न डिजीज़ अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगी. वाटर बॉर्न डिजीज़ कहाँ से होती हैं, अगर वाटर जो है वो प्रॉपर नहीं है, अगर ड्रिंकिंग वाटर सेफ़ नहीं है, वो ऑलरेडी अफेक्टेड है माइक्रोब्स से, तो उससे क्या होता है, वाटर बॉर्न डिजीज़. Now, personal and public hygiene also prevents spread of infectious diseases. It includes cleanliness, physical exercises, healthy habits, etc. अब क्या है, हमें अपनी पर्सनली तो हमें अपने आप को क्लीन रखना ही है, हाइजीन मेंटेन करना ही करना है, पब्लिकली भी उसको हमने मेंटेन करना है. पर्सनल हाइजीन में क्या आ जाता है, क्लीनलीनेस, साफ़ सफाई, फिजिकल एक्सरसाइज. हमारी बॉडी को हमें प्रॉपर एक्सरसाइज देना चाहिए सो दैट कि उसके ऊपर उसका जो इम्यूनिटी है वो भी इंक्रीज़ हो और कोई डिजीज़ जल्दी से अटैक ना कर पाए. एंड हेल्दी हैबिट्स लाइक टाइम पर सोना, टाइम पर उठना एंड प्रॉपर रेस्ट लेना, सब कुछ all these are included in this healthy habits.
Now, third general way of preventing infectious disease is proper and sufficient food to everyone. That means सभी को proper और sufficient food provide करवाना चाहिए. As food provides all the essential components of food in correct proportion. As food provides all the essential components in correct प्रोपोर्शन. करेक्ट प्रोपोर्शन में सभी के सभी कंपोनेंट्स जो फूड है वो हमें प्रॉपरली प्रोवाइड करवाता है. अ बैलेंस्ड डाइट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज़. जो बैलेंस्ड डाइट है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ग्रोथ के लिए बॉडी की, और साथ साथ रिपेयर करने के लिए हमारे सेल्स और टिश्यूज़ को. अगर कोई इंजरी हो जाती है उसको रिपेयर करने के लिए बैलेंस्ड डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट मीन्स अगर हम प्रॉपर डाइट लेंगे only then we are able to prevent infectious disease. और sufficient diet means कि sufficient amount में उसके अंदर vitamins होने चाहिए, sufficient amount में उसमें fats, carbohydrates, proteins, vitamins and minerals सब कुछ sufficient amount में होना चाहिए. Now क्लीन सराउंडिंग्स प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस. सेम अगर हमारी सराउंडिंग्स आसपास अगर हम अपना बिल्कुल साफ रखेंगे तो क्या होगा, जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं वो जल्दी से अटैक नहीं कर पाएंगी. हमारी जो बॉडी है उसको हम ऑलरेडी उसको डिजीज़ से प्रिवेंट कर लेंगे. नेक्स्ट इज स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंटिंग एक्सपोजर. स्पेसिफिक वेज क्या है, अगर कोई डिजीज़ को हमने स्पेसिफिकली उसको प्रिवेंट करना है तो उसके लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं. First is immunization. Immunization, it strengthens defense mechanism of the body against the infections. That means जो अपनी बॉडी को इम्यून करना, हमारी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करना, उसको एक ऐसी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना सो दैट कि कोई भी इन्फेक्शन हो या कोई भी डिजीज़ हो उससे वो उसके अगेंस्ट वो लड़ सके. नाउ नेक्स्ट इज़ vaccination. Vaccines stimulates the immune system against the microbes. That means जो vaccines हैं वो क्या करती हैं, हमारी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसको इंक्रीज कर देते हैं माइक्रोब्स के अगेंस्ट. वैक्सीन वॉज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर इन 1796. You must know that who discovered vaccine. It was discovered by Edward Jenner in 1796. Now what are these vaccines? अब ये vaccines होती क्या है, particularly क्या वैक्सीन को हम कैसे डिफाइन करेंगे. These are dead or weakened microbes. ये क्या होते हैं, dead और weakened, कमज़ोर किए हुए माइक्रोब्स होते हैं. When they enter the body they do not cause disease बट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ फॉर द पर्टिकुलर डिजीज़. वो जब एंटर करते हैं हमारी बॉडी के अंदर तो वो डिजीज़ को नहीं कॉज करते बिकॉज दे आर डेड और वीकेंड, बट वो क्या करते हैं, दे लेड टू द स्टिमुलेशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़. हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ को स्टिमुलेट कर देते हैं फॉर पर्टिकुलर डिजीज़. नाउ some vaccines and disease they prevent. Here is the table which gives vaccine and diseases which are prevented by these vaccination. Now anti-rabies vaccine, it prevents rabies. It is also known as hydrophobia. BCG vaccine, it prevents tuberculosis. DPT vaccine, it prevents diphtheria, pertussis, which is also known as whooping cough, and tetanus. Next is hepatitis B vaccine. It prevents hepatitis B, serum hepatitis. Now next is measles vaccine. It prevents measles. Now MMR vaccine. It prevents measles, mumps and rubella. Next is oral polio vaccine. It is also known as OPV. It prevents poliomyelitis. Next is TT vaccine. It prevents typhoid. Typhoid vaccine, it also prevents typhoid. H1N1 vaccine, it prevents H1N1 viral fever. These are some vaccines which prevent these diseases. Now students, these are some dates which are important from
point of view. Sometimes these are asked in your examination. World's TB Day, it is observed on 24th of March. Next is Malaria Day, it is observed on 20th August. World's AIDS Day, it is observed on 1st December. Now with this, your chapter is complete. This chapter, Why Do We Fall Ill, is complete. Now students, you have to complete your bioregisters. You must have done lesson number 5, 6 and 13 in your bioregisters. Complete your work. You will be asked to submit these anytime. Now after completing your bioregisters, you have to do some assignments that will be given to you time to time. Now, thank you students for listening, and please complete your bio register work, your in-text question as well as back exercise questions. That will be sent along with PDF with this video.